coming back, and that you just gotta do what you gotta do. But I knew if I hadn't taken that flight, the toughest flight, I probably wouldn't be here 4.5 years later. So as a mother, I had to do that, but also as a woman, I need to do that because being a mother is, of course, a part of my identity, but it's not my only identity. My identity is also being Sanya and being a tennis player or whatever it might be. So yeah, so I think that this shows you that you can do whatever you want as long as you have the grit and the determination, and that's why I can resonate with the brand and the value of the brand and what we've just showcased you. Right. Are there some questions this side? Hi Saina, this is Manchika from Times Now. I'm a huge fan. Do you want to talk about self-love being a mother? Because generally what happens is mothers अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती जब when they after having a baby. So yeah, 100%. 100%. I think you're so right, and I'm so glad you asked this question. There's not many people who ask mothers if they're okay after they have a baby, actually, because everybody sort of just cares about the child, and everybody's talking about the baby's pooping and feeding, and how heavy the baby was, how many times he wakes up or she wakes up in the night. And there's not many people that come to the mom and say, are you okay? Like, are you doing fine? And that happens to most moms, and the ones that it doesn't happen to, you're very lucky. I think that, as mothers, we are, like I said earlier, mom's guilt is so real that no matter what you do, and there's probably nobody in the world that can love the child more than the mother anyway, right? I mean, the fathers might want to debate with that, but I don't think that's debatable. And I think that, as a mother, you have to learn to forgive yourself. And I have to learn to forgive myself that sometimes if I'm not able to show up 100%, even for my child, because I'm tired, because I haven't slept all night, it's okay. And we have to be able to do that, not just as mothers, but as women. I think we're very self-critical in many ways, and I think that we need to learn to love ourselves and learn to forgive ourselves a little bit more, just so that we are able to be the best versions of ourselves. And if you're not going to self-love, you're not going to be happy, and not a happy mom is really not something that any child really wants or needs. So yeah, so I think self-love comes first, always, and very close to that comes your child. So any more questions? Yes. Okay. Sanjay, this is Manshu from Singapore. Sanjay, आप जब भी खेली हैं देश के लिए, नाम रोशन किया है आपने देश का, जब भी आप खेली हैं या फिर अब आगे खेलेंगी, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे एथलीट हैं जो आज बहुत परेशान हैं और वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उनकी कुछ मांग है, आज वो जो है रोड पर बैठे हुए हैं, जो देश के लिए जिन्होंने नाम गौरव किया है, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं. क्या कहना चाहेंगी अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रखें तो? मुझे एक्चुअली जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया था ऑलरेडी, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बार बार इस बारे में बात करनी चाहिए, और वो भी इस मौके पे जब हम यहाँ कुछ और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन जो अगर आपको मेरी राय चाहिए, आप मेरा ट्वीट देखें, उसमें लिखा हुआ है. सानिया, आप माइक ले लीजिए. सानिया, आप टेनिस और बच्चा अपना अजहान या ज़हान नाम है, और शोएब मलिक को, तीनों को मैनेज कैसे करती है? तीनों को मैनेज? जैसे वो मैनेज करते हैं वैसे मैं मैनेज करती हूँ. आप अगर शोएब मलिक को वो सवाल पूछेंगे तो फिर मैं भी आपका जवाब दे दूंगी. शोएब टेनिस नहीं खेलते ना, बट क्रिकेट तो खेलते हैं ना. मुझे आपसे ये पूछना है, आपने इसी साल टेनिस पे रिटायर होने का फैसला लिया था, तो क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, और क्या इस फैसले के पीछे आपके माँ बनने का कोई रोल था, कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही थी आपको? नहीं, माँ तो मैं 4.5 साल पहले बनी थी, तो जाहिर बात है उसका कोई लेना देना नहीं था. लेकिन आई डोंट नो आपको क्यों लगता है कि जल्दबाजी थी. मैं 20 साल से प्रोफेशनल टेनिस खेल रही थी. मैं 2003, आप शायद मुझसे छोटे हैं, आपने मुझे देखा होगा आई थिंक बड़े होते, तो इसलिए आपको लग रहा है कि
मैंने मैं आपको बचपन से देखा हूँ, हाँ, कोई शक नहीं है, और मैं ये लेकिन- बोल के ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी एज क्या है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब छोटा था तब से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी टेनिस में सानिया मिर्जा, मतलब वो इंडियन टेनिस में सानिया मिर्जा के बाद मैं अभी किसी को देख रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और मुझे जल्दी इसीलिए लगती है कि आप अभी फिट हैं, और शायद ऐसा लगता है, और सेरेना विलियम्स ने भी खेला था काफी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे भाई आप जब बचपन से देखते, मेरा भी बचपन ही था तभी भी। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन हम दोनों का बचपन साथ ही साथ होगा मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट एक्चुअली उसके कई सारे रीजंस थे। पहला रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न जो था कि मेरे जो इंजरीज थे, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है नहीं, मेरे 3-4 सर्जरीज हुए में हैं। तो एंड आई टर्न प्रो इन 2003, वेयर इन स्टैंडिंग इन 2023, it's been 20 years of being a professional tennis player. I'm very flattered that you think that I'm still fit, but honestly, inside my body, I don't feel like that with my joints and everything. Secondly, it was also to do with my motivation levels were not, where they should be. And मेरा हमेशा यही मानना है कि अगर आप कोई चीज़ में 100% नहीं दे सकते, for whatever your reasoning is, आपको नहीं करना चाहिए। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक, it was like a sign for me. And I do want to spend a little bit more time with my son. That is definitely something. I do want to do the boring person products. It's always been something that I try to resonate with. It's always been something that I connect with. And actually, amazingly enough, in this, this was something that I was using for my baby even before I became associated with Philips Avon. And now my sister uses it for her baby, and this is really not an endorsement. They didn't even know I was going to say this. So this is the truth, and so it's always good to associate with brands that you actually believe in, and that you actually can use, and you can actually feel that they are something that is going to benefit in different ways. In this case, with babies and society. So yeah, I'm very happy to be here. एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर पे बहुत सवाल उठते हैं, और एक माँ के करियर पे और भी ज्यादा। तो वो पूछते गए, मैं जवाब देती रही। माँ बनने के बाद एथलीट्स का करियर रुक ही जाता है, नहीं? ओ रियली? एक माँ को रुकने का मौका ही कहाँ मिलता है? बेटा, अब तो तुम माँ बन चुकी हो, टेनिस किट छोड़ो, बेबी किट उठाओ। Mothers are really strong, आंटी। मैं दोनों उठा लूंगी। इतना वेट बढ़ गया है, वापस शेप में कैसे आएंगी मैडम? सबसे पहले तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस का वेट लूज करूंगी। डबल्स खेलें? माँ बनने के बाद हमारी स्पीड और एजिलिटी मैच कर पाओगी? Come on guys, एक माँ से ज्यादा फास्ट और एजाइल किसी को देखा है क्या? Not just players or sellers. Making a comeback is tough for any mother. It takes a lot of strength, courage and support. So this Mother's Day, let us help mothers around us make that much deserved comeback. Just like the Philips Avon Breast Pump, which is a true companion for all mothers, ensuring best nutrition for your baby and helping you to come back your way. Philips Avon wishes all the mothers a happy Mother's Day. Thank you so much. Do you want to say anything about the video before we get to the questions? No, I want to know what they think about the video, because I saw the video yesterday and I loved it. I think that, in 2 minutes, it really is
a journey that a lot of mothers go through. I mean, I've been through this where you're constantly questioned and you're constantly by different people and by society and in different ways, and you're out there not just to prove to them, but you're also out there to prove to yourself. And I think you owe it to yourself to love yourself and to give yourself that chance of being a mother, but also being a woman of substance and being someone that wants to follow her own dreams. So yeah, that's what that really resonates with. Thank you. So we're open to questions. You know it is. तो बस यही कुछ रीजंस थे. तो आप अभी भी मुझे मतलब आप मिलेंगे मुझसे, बस टेनिस कोर्ट पे नहीं मिलेंगे. मतलब मैं ये मान के चलूँ कि वहाँ पर टेनिस मैच देखेंगे नहीं, चाहे वो अब इंटरनेशनल तो देख ही नहीं सकते. जैसे आजकल IPL चल गया, वैसे ही टेनिस में भी अगर कोई होता है या कोई भी मतलब होता है तो वहाँ आपको नहीं देख पाएंगे, ये आप कह रही हैं. लेकिन 20 साल से अगर मैं ही हूँ जैसे आप कह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट द नेक्स्ट जनरेशन टेक्स अप ना. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो हाईलाइट that if for 20 years one person is holding the baton, it's time to pass on the baton at some point. कभी ना कभी MS धोनी भी रिटायर होती है, सचिन तेंदुलकर भी रिटायर होते हैं, सानिया मिर्जा भी रिटायर हो गई है, तो कभी ना कभी बैटन पास होगा एंड आई होप कि जल्दी होगा. आपको क्या लगता है कि अगली सानिया कौन, भारत की अगली सानिया? हम लोग चाय पे बैठ के Thank you so much. If you want a photo op, we can do that as well.